सलाम। बहन भाइयों, अंग्रेजी की बढ़ती हुई जरूरतों को देखकर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं या आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो बगैर इंग्लिश के ये संभव नहीं है। तो बहन भाइयों, देर किस बात की। हम अपने लास्ट स्पीकर के पास चलते हैं, मिस्टर हबीब सर, जो कि हमारी लोकल स्टूडेंट है। ये बिहार या के बंगाल से नहीं आए हैं और हमारे पास दूसरी बैच में बंगाल के भी स्टूडेंट हैं, दूसरी जगह के हैं। चलिए मिस्टर हबीब, आप क्या कहना चाहते हैं अपने, कब आपको लगा कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहिए, अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। गुड मॉर्निंग ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक give me a golden chance to speak front of all. So, as you already know, my name is Nabi, and I am a learning English speaking from Global Spoken English. When I was in childhood and when I used to study in my old school, so that time my friend circle was not good. We sat behind, we all sat behind, and that time we didn't know what is the English. We all we all know that Hindi is necessary and Hindi, because I have completed my education in English medium school, but even then I can't speak that time in English. So yeah, I got out from that school, and when I go in other when I went in other school, so there there also I understood that English is not important, and I then when I got from second school, so now my school completed. Now I have to go in college. So in college I went and there also I understood that English is not important. Even we talk in English. We used to talk in English, Hindi, and in friend circle. So sometimes I used to speak in English, but I made a lot of mistakes because my grammar was very weak at that time. So after that, then got a lockdown came, and everything is closed. That time I sat at home. So I call my one relation, my brother. I am sitting at home and I am searching for a job. So can you, give me any job? So yeah, he said that. So he just said that, Altama Sharif, you know English. So I just don't want to say that no, I don't know English. So So he just said that please speak in English. So that time I started speaking in English. So that time he said that your English is very big. You have to join any coaching to learn English. So that time my mom already forced me to join any coaching. So that time I thought that no coaching means uh, what nothing will be happen to join coaching classes. We can learn from at home. So that time, so I used to learn by myself, but I can't. So after that, when I go through this board and I saw a board global spoken English. So that time I came and talked to sir for learning English. And right now you can see how my English. Uh, I know I made a lot of mistakes while speaking, but I can speak better than previous in my school time. So I'm very thankful to my sir. You know, if sir had not, so I cannot speak English right now. Thank you. सो जैसे कि आप सुन रहे थे कि सर कह रहे थे कि मैं कोरोना के टाइम पे घर पे बैठा हुआ था, जब मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कहा कि मैं जॉब के लिए कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ। तो जिनसे उन्होंने कंसल्ट करना चाहा, उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश बोल कर कुछ बताइए। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो काफ़ी मिस्टेक्स हो रही थी, काफ़ी हेजिटेशन हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ग्लोबल के बारे में पता किया, लोगों ने मुझे इसके बारे में सजेस्ट किया।
फिर मैंने ग्लोबल ज्वाइन किया, तो आप बोल पा रहे हैं। अगर ये छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है, बाकी में भी कुछ हो रही थी, लेकिन आई सी यू नो दैट और इस ह्यूमन, गलती करना इंसानी फितरत है। जो गलती से करेगा वो कुछ नहीं करेगा, दैट इज गारंटी। तो बट ही वाज ट्राइंग टू स्पीक वेल। तो अब इसी के साथ मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, वीडियो हमारी लंबी हो रही है। और कोशिश करिएगा, बिकॉज फॉल डाउन 7 टाइम्स एंड गेट अप 8 टाइम्स। 7 मरतबा गिरिएगा, 8 मरतबा उठिएगा, मतलब जब तक आप कुछ अचीव ना कर लें कोशिश करते रहिएगा। बिकॉज अगर आप इस चीज में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि लाइफ हमारी एंड हो जाती है। इसके डेफिनेशन एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या प्रूव किया है कि ईएनटी का फुल फॉर्म होने होता है, ई मतलब एफर्ट, एन मतलब नेवर, डी मतलब डाइज। एफर्ट नेवर डाइज, क्या एक खूबसूरत है। आप इसको फॉलो करिएगा और जब भी नाकाम हुई उससे कुछ सीखिएगा, मैं क्यों नाकाम हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, और ट्राई करिएगा। यू कैन डू इट व्हाट अदर कैन डू इट, और आप वो कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, आप उसे बड़ा भी कर सकते हैं। यू आर आई यूनिक पर्सन। ओके गाइस, इसी के साथ में आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वन। गुड बाय। सलाम। बहन भाइयों, अंग्रेजी की बढ़ती हुई जरूरतों को देखकर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं या आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो बगैर इंग्लिश के ये संभव नहीं है। तो बहन भाइयों, देर किस बात की,